Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing Class 12, Chapter 6, Attitude and Social Cognition. Now this chapter deals with a lot of social psychology. अब social psychology क्या होती है? हमने पढ़ा था in class 11 chapter number 1 that social psychology is the branch of psychology which investigates how the behavior of an individual is affected by others and the social environment, right? So you know how we always debate about nature versus nurture, and we have done it in the previous chapters of class 12 and 11 as well. तो उसमें हम हमेशा बात करते हैं नेचर कंपोनेंट यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट की एंड नर्चर कंपोनेंट विच इज द सोशो कल्चरल कंपोनेंट, द पेरेंटल, द डेवलपमेंटल काइंड ऑफ कंपोनेंट आउट देयर. तो इस वाले चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोशल कंपोनेंट, द नर्चर पार्ट, मोस्ट ऑफ इट द नर्चर पार्ट of psychology. Okay, how different kinds of behaviors are affected by the people around us. हम कई चीजें ऐसी करते हैं because of the presence of others, some things we don't do because of the presence of others, how our performance is inhibited or facilitated by the number of people, the kind of people around us, and all that and many more concepts we are going to be discussing in this chapter. So let's get started with the brief introduction with the first main heading, which is that of explaining social behavior. ठीक है? So इसमें हम लोग थोड़े concepts पढ़ते हैं. First of all, we're going to discuss about the attitudes. Obviously, it's in the title, Attitude and Social Cognition. So attitudes, these are views that people form, because of the social influences around them. Then there's impression formation, which is when we meet one person for the first time and we make inferences about them कि ये कैसे होंगे, what would their life be like, are they good or a bad person. Those kind of things come as part of the impression formation process. Then basically we are assigning certain sort of causes to why someone is doing something. Remember that example we were discussing, that someone is running on the railway platform. So why they are running? So we are assigning a cause to someone's behavior. We are saying that, oh, maybe he got late, that's why he's running behind the train. Or maybe he left something that was precious to him inside the train, that's why he's running to fetch that thing and then get out of the train once again. All these kinds of causal inferences that we draw are called attributions. Okay, then social cognition aata hai. All the processes and mental activities related to gathering and interpretation of information about the social world is called social cognition. Okay, so don't worry, ye terms hum thodi si quickly kar rahe hain because NCERT mein the introduction is given like that, but all these terms will be discussed in detail as the chapter progresses. So don't worry if you don't understand it 100% out here, it's totally normal. Okay, so इसमें हम बात करेंगे social facilitation and inhibition की, which we have talked about before. So if your performance is improving in front of a crowd, it is called social facilitation, and if your performance is decreasing, deteriorating in front of a crowd, it is called social inhibition. Okay, so then there's pro-social behavior that is also discussed. छोटी terms they have just kept throwing out here. Pro-social behavior is the behavior of helping others. So we are also going to find out why people help others, what are the motivations, how you can increase your own pro-social behavior. Okay, all these and more concepts we are going to study in this chapter. So let's move on to the second main heading, which is that of nature and components of attitudes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे attitudes की. Let's get started with the definition of the attitudes. Attitude क्या होता है? It is a state of mind, a set of views or thoughts regarding the same topic called the attitude object, which have an evaluative feature, positive, negative or neutral quality. तो basically एक attitude क्या होता है? Your opinion about something, ठीक है? And it is also collection of thoughts. तो कोई भी आपका attitude बहुत सारे mini attitude से बना होता है. Just let me give you an example. Your attitude about conservation of earth, okay? कि how much environment friendly we should be, what kind of things we should eat when it comes to the environment, preserving the environment. Your attitude about conservation of the environment will depend upon a lot of mini attitudes. For example, your attitudes about dietary preferences. So if you are a vegetarian, then obviously you will have a different set of reasons why you are, and reasons and different kinds of processes that you are using to promote environmental conservation. If you are non-vegetarian, then you will use different kind of processes. So this is just an example. बहुत सारे mini attitudes से form होके हमारा एक bigger attitude बनता है, that is that of conservation towards the environment. Okay, so attitude you can also form about any kind of person. So for example, your attitude about let's say Rihanna, or your attitude about Taylor Swift or about Shah Rukh Khan,
whatever, you know, celebrity that you like, that is also formed due to a variety of, you know, mini attitudes. So for example, if you love long hair, your attitude about long hair is positive, then you are more likely to like celebrities who have long hair. Okay, so I'm again repeating myself ki chote chote attitudes se you will form a bigger attitude. Now attitude has three components: affective, behavioral and cognitive. Affect, याद है हमने ये टर्म पढ़ी थी affect in chapter number 4 psychological disorders, जिसमें we were talking about flat affect, blunt affect. So affect क्या होता है? आपकी facial expressions, आपका जो emotion, you can say, you know, the emotion associated with any kind of attitude. So every attitude has an affective component, मतलब how you are feeling about the attitude. ठीक है, कि कैसा आपको फील होता है उस एटीट्यूड को possess करके, या if there are any feelings attached to the attitude. So for example, if someone is really passionate about the environment, saving the earth, for example Greta Thunberg, then they have an affective component attached to the attitude, because they think that, you know, earth is our mother and we should really, you know, preserve its resources, we should conserve the environment. तो ये सारी जो चीजें, that is the affective. feeling about, feeling emotional, जैसे होता है ना, किसी भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो you start feeling emotional about it. For example, your attitude about let's say domestic violence. So if you are a woman or even a man and you feel passionately about the topic, you will probably start, you know, to feel a lot of emotions, whether it is whether you start crying, whether you start smiling, whatever it is. Then obviously those affective components, रोना हंसना, किसी भी चीज को emotion से बोलना, ठीक है, that will all come in the affective component. Behavioral component कौन सा होता है? that if you have a strong attitude about against domestic violence, that domestic violence should not occur, then you are more likely to take part in a protest or a rally or a march that is basically condemning domestic violence. ठीक है, so it will obviously determine your behavior. And then there is the cognitive component. Cognitive component मतलब what you think, what is your thinking process about the attitude, ठीक है, what is the you know, information processing जो एक बात आ जाती है, या फिर आपकी memories related to the attitude, cognitive thinking part of the attitude, ठीक है. Next we come to the topic of beliefs and values. Beliefs क्या होते हैं? How is it different from attitude? Beliefs are just the cognitive component of attitude, ठीक है, and form the ground on which attitude stands, such as the belief in God and the belief in democracy or political ideology. So if you believe in God, then obviously you're going to obviously behave in ways that show that you believe in God. For example, you might go to the temple, but beliefs are basically thinking components, mental components. अगर आप किसी को नहीं बताओगे कि आपके beliefs क्या हैं, then they will not be able to infer what your beliefs are. You have to tell them what your beliefs are. Okay. So values क्या होती हैं? Values are beliefs that contain a should or a ought aspect. For example, I should study 6 hours a day. This is a value component. ठीक है, एक should और एक must आ जाता है. या फिर we should not waste, you know, or we should not overuse plastic. That is a value attached to it. ठीक है, मतलब you might be following it completely or not following it, but the point is that you think that this should be done. Okay, that is a value. So features of attitude में आ जाते हैं. So first feature we are going to do is that of valence. Valence क्या होता है? Positivity और negativity. ठीक है, valence में attitude tells us whether the attitude is positive towards an attitude or object or negative. For example, as I said कि जैसे एक corporal punishment at one point, आपका attitude उसकी तरफ positive है या negative, whether you want corporal punishment to exist or you are against that stance. ठीक है, so any kind of attitude you have, you can have a positive or a negative attitude towards. Okay, for example, smoking. Once again, I'm using an example कि smoking के लिए, whether you like to smoke, whether you support people who smoke or you do not support people who smoke. ठीक है, all these kinds of valence of attitude. एक्सट्रीमनेस आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट. एक्सट्रीमनेस क्या होता है? हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव एन एटीट्यूड इज. अब पॉजिटिव और नेगेटिव है ये तो पता चल गया. सम पीपल माइट नॉट लाइक स्मोकिंग टू द एक्सटेंट कि यू नो दे फील कि नहीं, यू शुड नॉट स्मोक, बट इफ समवन इज स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ मी देन आई एम ऑल राइट विद इट, है ना. Some people will get up and get out of the room. Some people will start shouting कि why are you smoking, why are you killing yourself, है ना. So it just depends on how positively or how negatively you think about a particular attitude. If you are very 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 negative, extremely negative about smoking, then obviously you will react in a more extreme manner if someone is smoking in front of you. ठीक है, or positively maybe similarly that will happen. Then comes the simplicity or complexity of attitude. तो simplicity मतलब कि attitude, whether it contains a set of mini attitudes or not,
और complexity whether it contains a lot of mini attitudes. For example, your attitude about world peace है ना is a complex attitude, क्योंकि उसमें animals का भी होगा, उसमें humans का भी होगा, उसमें बहुत सारे mini attitudes वो होंगे. It is not a one word answer that you can say, right? But for example, your attitude about Chinese cuisine, you can just tell us that I like it or I do not like it. So that is a very simple attitude. Then the last one is that of centrality. Centrality क्या होगा? The role a particular attitude plays in your system, and it's basically much more if it is central, and it is much lighter if it is non-central. तो central attitude क्या होगा? जैसे for example कुछ लोगों के लिए as women, one of the central attitudes of their life is feminism. Okay, but for some people it might not be that central. So again, if you feel very strongly about something, then that will have more influence on your behavior rather than if you think, for example, your attitude, again, as I said about Chinese food, is not a very central attitude of your life. ठीक है, Chinese food अगर आपको पसंद है या नहीं भी पसंद है, तो it's not going to make much difference in your life, right? Okay, so now we move on to the next heading, that is attitude formation and change. Okay, so इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले attitude formation की. In general, attitudes are learned through one's own experiences and through interaction with others. Process of attitude formation में आते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारे बहुत सारे different processes are explained जिनके थ्रू हम एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं. जैसे कोई भी अगर एटीट्यूड है, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स महात्मा गांधी, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स जवाहरलाल नेहरू, ऑल दीज पीपल जिनकी तरफ आपका एटीट्यूड बन रहा है, दैट कैन बी फॉर्म्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली योर एटीट्यूड अबाउट चाइनीज फूड, योर एटीट्यूड अबाउट योर फ्रेंड्स, योर एटीट्यूड अबाउट फेमिनिज्म, योर एटीट्यूड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे दैट इट कैन बी फॉर्म्ड थ्रू एसोसिएशन. For example, a positive attitude towards a subject can be linked through the positive association between a teacher and a student. So this personally happened with me also, that I actually used to really be scared of maths and I used to hate maths a lot in class 10. But fortunately, I got a teacher in class 11 जो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से conceptually maths समझाते थे. तो 11th और 12th में actually, it became one of my favorite subjects. So because you start associating maths as a subject with the particular teacher, you will start to have a different kind of set of attitude about the subject. Okay, so this is called association. Association कौन सा? Classical conditioning, operant conditioning याद है? जो learning by association, stimulus जो हमने पढ़ा था chapter 6 class 11 learning में. ठीक है, so everything is pretty very much connected. That's why I keep bringing up the different kinds of chapters we have done before, क्योंकि अगर कोई भी application based question आ गया, so आप उस चैप्टर को रिकॉल करके you will be able to write about conditioning and association. ठीक है, so I hope that helps. Now the next one is through reward or punishment. ये हमारा आता है operant conditioning का, जो हमने पढ़ा था reinforcement, जो माउस वाला एग्जाम्पल था B.F. स्किनर का. ठीक है, इसमें increases or decreases the further development of the attitude. For example, your attitude towards the elderly. Let me give that example. अगर आप किसी elderly की help कर रहे हैं, उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, then your parents will obviously reward you with something. They will praise you, right? But if you are talking to them in a bad way, या फिर you have a poor attitude towards the elderly, then you will be punished for that. So obviously, because we want rewards and not punishments in our life, अगर हमको किसी चीज के लिए praise या reward मिलता है, we will continue to manifest that attitude. Okay, the next one is through modeling, which is that of social learning, जो हमने बैंड्यूरा का पढ़ा था, बोबू डॉल एक्सपेरिमेंट वाला. Okay, इसमें क्या होता है? observing others, being rewarded or punished for expressing thoughts or showing behavior of a particular kind towards the attitude object. आपने इसको vicarious learning के थ्रू भी पढ़ा होगा. I think I was discussing this in the last chapter also about vicarious learning. किसी को देख के कोई चीज सीख लेना. तो जैसे अगर आपके एल्डर सिबलिंग हैं जो उनकी किसी बात पे उनको डांट पड़ रही है कि वाई यू आर टॉकिंग बैक टू एन एल्डर पर्सन, तो अगर आपको वो दिख रहा है, देन ऑब्वियसली योर एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर, हाउ यू शुड टॉक टू एल्डर्स विल चेंज. उनको देख के ही बदल जाएगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू बी इन दैट सिचुएशन वेयर आपको डांट पड़ रही है. आप अपने बड़े भाई बहन की डांट देख के दैट विल बी इनफ लर्निंग फॉर यू. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन फॉर्म एन एटीट्यूड. Group or cultural norms के through, for example, our attitude towards God is actually very much dependent on what kind of schooling we had, what kind of parents we lived with, and what kind of surrounding area we lived in. So obviously, if you are, for example, मैं बताती हूँ आपको कि someone who is living in a very religious town like Mathura or Benares,
or any kind of religious town, then that person obviously will have God surrounding him from all of the areas, है ना. जो मथुरा में who is born and who is studying there, वहाँ पे हर जगह कृष्ण भगवान का नाम चल रहा होगा. So उस ग्रुप और कल्चरल इन्फ्लुएंस से their attitude towards God will be affected a lot. ठीक है, more likely that they will believe in Krishna, believe in God. ठीक है. एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ आता है हमारा. मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड्स आर फॉर्म थ्रू द मीडिया. ये हमारे बहुत डिस्कशन में हो रहा है आजकल कि पीपल विद सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विल वॉच सर्टेन काइंड ऑफ चैनल्स एंड द अदर्स विल वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल. सो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज का आपको एटीट्यूड अगर फॉर्म करना है तो यू कैन वॉच द न्यूज, यू कैन वॉच सोशल मीडिया, एंड वहां पर आपको सब लोग एक ओपिनियन दे रहे हैं, यू कैन टेक इट इनटू अकाउंट. ठीक है. सो for example, your attitude about your own body can also be influenced by social media. If you're looking at pictures of models who are always really fit, are eating a certain kind of diet, then that's how your opinion about your own body or opinion about your own diet will form. Okay. So next we come to the subheading that is called factors that influence attitude formation. It is quite simple, but मैं आपको फिर भी अच्छे से explain कर देती हूँ. It's also similar to what we were studying. Number one factor that can affect your attitude formation is family and school environment. As I was explaining कि आपकी family कितनी religious है, for example, या आपके school में कितनी religious practices follow हो रही हैं, that can determine your attitude towards God. For me, I went to an Anglo-Vedic school and we were taught Vedas there. So obviously, I have a very a positive bent towards Hindu mythology. So that's where I learned all those things. And if you went to a Christian school, if you went to a convent, then obviously you'll have those kinds of bent towards Christian practices, Christian mythology. तो ये आपका जो एटीट्यूड फॉर्मेशन है that will happen through your family and your school peers. ठीक है. Reference groups मतलब indicate the norms regarding acceptable behaviors of thinking, reflect learning attitudes and cultural norms. ये reference groups का एक important point है कि ये reference groups आपके parents भी हो सकते हैं, आपके I think इसमें एक line भी लिखी हुई है वाली. हाँ. So especially in the beginning of adolescence, जिस peer group में आप हो, जैसे अगर आपका peer group has a positive attitude towards smoking and drugs, then it is it can be very harmful, because then probably you will also have a positive attitude towards smoking and drug use. Okay. The next one is personal experiences. कभी कभी आप खुद भी देख लेते हो कि you were doing certain kind of thing और आपको अच्छा वो चीज नहीं मिली. Your personal experience with something is bad. जैसे मैं आपको एक simple example से explain करती हूँ, वो Chinese food that you had it and then you got sick and then आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपका Chinese के साथ एक association form हो गया, आपका personal experience खराब हो गया Chinese food के साथ. So maybe you will not like it. ठीक है. Media related influences, as we discussed before also, कि media is actually very important in shaping our opinions, our opinion about different kinds of things that are happening in the world, whether it is a protest, whether it is any kind of rule or law that is being passed, or it is any kind of actress. Everything that we think about is actually pretty neatly not controlled but influenced by the media. So we have to be very careful on what kind of references we are watching on media, so that we don't have a biased opinion of everything. Okay. So next we will come to the heading, the main heading, that is that of attitude change. ठीक है. अब हमें ये तो पता चल गया कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, बट नाउ वी ऑल्सो रियली वांट टू नो कि अगर किसी का एटीट्यूड किसी चीज के लिए बदलना हो तो वो कैसे बदलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज फॉर्म्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट स्मोकिंग or a positive attitude about drug use, then that is something we need to change. So how will we change the attitude? Alternatively, अगर आपको कोई product के लिए convince करना है खरीदने के लिए, then also they need to change your attitude towards the product. ना, you might feel very neutrally about Colgate, but उन लोगों को आपका attitude positive करना है Colgate के towards. So how will they change your attitude? ये बात जो है यहाँ पर we are going to discuss. इसमें दो main हमारे actually three main theories, or you can say processes are discussed. The first one is the balance or POX triangle. ठीक है. इसमें क्या होता है? Represents the relationships between three aspects or components of attitude. P क्या होता है? P is the person whose attitude is being studied. O is another person and X is the topic, which is the attitude being studied. For example, इसमें एक बहुत ही अच्छा NCERT में they have given an example कि P और O को अपने बच्चों की they want their kids to get married. Okay, so P has a negative attitude towards dowry and O has a positive attitude towards dowry. तो X क्या हो गया? X is the dowry because उसके बारे में attitude form हो रहा है. ठीक है. Now
POX हैज टू बी बैलेंस्ड, मतलब जो POX का ट्राइंगल है हमारा, ये P है, ये O है और ये P है, ये O है, ये X है, आप ऐसे अज्यूम कर लो एक ट्राइंगल है, इसका जो ओवरऑल साइन होना चाहिए ना वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब या तो तीनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव हो, ओनली इन दैट केस पूरा जो ओवरऑल हमारा उसका साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ एनसीईआरटी के ही। फॉर एग्जाम्पल P हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स X डाउरी, ठीक है, तो इसको हमने प्लस कर दिया, बट O हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डाउरी, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कर दिया, और O और P को एक दूसरे से बच्चों से शादी करनी है तो ऑब्वियसली दे हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, तो प्लस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल साइन हो गया अनबैलेंस्ड। इट मीन्स मेंटल डिस्टर्बेंस कॉज होगी P और O को दोनों को, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी पे डाउरी वाली अग्री नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी हैव टू ऑप्शंस, either P should change his attitude about O, that means P should say कि ये तो O तो बिल्कुल बेकार है, इसको लगता है कि dowry is just, it is justified, तो I am not going to marry my kid here and I am going to move out, यहाँ से मुझे I don't like this person anymore, so वो साइन नेगेटिव हो जाए, या फिर P should change his attitude about X which is dowry, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो डाउरी है दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज राइट, एंड ठीक है डाउरी अगर उनको अच्छा लगता है तो हम भी दे देंगे, तो इफ देयर एटीट्यूड इज पॉजिटिव टुवर्ड्स डाउरी देन अगेन ये चीज प्लस हो जाएगी और ओवरऑल साइन बैलेंस हो जाएगा। सो होपफुली P was able to make a sensible decision and actually neglected O rather than changing his attitude about dowry, which is actually a bad thing. तो दैट इज हाउ एटीट्यूड फॉर्मेशन वर्क्स। ऐसा आपके साथ भी बहुत होता होगा कि आपको कोई चीज पसंद है या कोई इंसान पसंद है, आपके फ्रेंड को पसंद नहीं है, and you are having conflicts over there, so either you have to change your opinion about that person or that object, or you have to change your opinion about your friend, ठीक है। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइनीज फूड या मैक्सिकन फूड की बात कर रहे हैं तो मे बी यू डोंट लाइक इट एंड योर फ्रेंड लाइक्स इट एंड यू आर ओके टू लिव विद इट, है ना, लेकिन फिर भी अनबैलेंस तो होगा, डिस्कम्फर्ट तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर फ्रेंडशिप टू द एक्सटेंट कि यू हैव टू ब्रेक योर फ्रेंडशिप। बट इफ यू हैव अ डिफरेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, फॉर एग्जाम्पल कि कौन दीज पीपल आर नॉट ह्यूमन बींग्स, जो एक सर्टन काइंड ऑफ सेक्ट के लोग हैं, तो देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू ब्रेक द फ्रेंडशिप बिकॉज दैट इज मोस्ट सेंट्रल एटीट्यूड। ये चीजें हम आगे बात करेंगे कि किन किन चीजों से एटीट्यूड चेंज डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारी जो थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस। Cognitive dissonance emphasizes on the cognitive component of attitude and it must be constant, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी आई है consonance और dissonance वाली बात। Balance and cognitive dissonance are examples of cognitive consistency, which means that two components of or elements of the attitude or attitude system must be in the same direction. If this does not happen, the person experiences a kind of mental discomfort in the sense that something is not quite right. मतलब कि अगर किसी को लगता है दैट पान मसाला इज बैड फॉर हेल्थ बट दे आर स्टिल हैविंग पान मसाला, देन ऑब्वियसली आपको पता है कि इट इज बैड फॉर हेल्थ बट योर बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट विद योर एटीट्यूड, सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट। आइदर यू हैव टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट पान मसाला दैट इट इज एक्चुअली नॉट दैट बैड फॉर हेल्थ, और यू हैव टू क्विट ईटिंग पान मसाला, ठीक है। तो स्मोकर्स का एक्चुअली आप देखोगे बहुत ये डिसोनेंस होती है उनके माइंड में कि ना दे एक्चुअली उनको स्मोकिंग बहुत अच्छी लगती है एंड दे वांट टू स्मोक, तो वो दे स्टार्ट जस्टिफाइंग विद डिफरेंट रीजंस। ऑफन दे विल टेल यू कि अरे तुम दिल्ली में तो रह ही रहे हो, देयर इज हेलो लॉट ऑफ पोल्यूशन हियर, सो यू आर आल्सो गोइंग टू डाई इन लाइक प्रॉब्ली 20 years, so what's the difference if I have a couple of cigarettes a day, it's not going to make much of a difference. So that is one of the excuses they will give in order to have that kind of consonance in their head कि actually smoking इतनी ज्यादा injurious नहीं है health के लिए, that's why I'm doing it, I'm not a stupid person कि I know that smoking is injurious and it kills, फिर भी मैं कर रहा हूँ। They will start making excuses, ठीक है। The final one is the two-step concept. इसमें क्या होता है कि the attitude change takes place in the form of two steps. Number one, the target of change, the person whose attitude is to be changed identifies with the source. Identification means that a target and a source have mutual regard and attraction, ठीक है। इसमें एक very good example of any kind of product endorsements that cricketers or Bollywood celebrities do, ठीक है। अगर आपकी एक favorite Bollywood celebrity है and she is endorsing any kind of let's say body lotion brand, ठीक है। So first of all she has to identify with you, she has to make you like her and identify with her, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण है then she has to invest in her fans and she has to be appreciative of her fans so that the fans will follow her and her actions, ठीक है, they will identify with her.
After this has taken place, she will have to show her behavior, positive behavior towards the body lotion. Only then she will be able to convince you कि use this body lotion only when she has established a good relationship with her fans. ठीक है? So the source himself or herself shows an attitude change by actually changing him or her his or her behavior towards an attitude object. Observing the source change attitude and behavior, the target also shows an attitude change through the behavior. So obviously, first of all, she has to identify with you. Then she has to take that body lotion and advertise it. कि ये बहुत अच्छा है, इससे मेरी skin better हो गई, or I use this for this so and so. She has to show a positive attitude towards the lotion, and only then you will actually be convinced of doing something she is doing, which is using the lotion. Okay. Then next we come to factors that affect attitude change, जो मैं आपको पहले बता रही थी. Let's quickly get on with this. First जो हमारा फैक्टर होता है, it's the characteristic of the existing attitudes. ठीक है, वही जो हमने पहले पढ़ी थी, valence, extremeness, simplicity और complexity, centrality जो है हमारी, और significance of the attitude determine the attitude or attitude change. Obviously अगर आपका attitude positive है, कम extreme है, आपको ज्यादा peripheral है, it's not very central to you, and simple है, तो it will be easier to change. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक जगह का मैक्सिकन खाना खा के तबीयत खराब हो गई थी, देन अगर आप एक एड देखोगे जिसमें रणवीर सिंह प्रॉब्ली इज एडवर्टाइजिंग इट्स टाको बेल लेट्स से, तो यू आर मोर लाइकली टू थिंक कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं, मे बी दैट रेस्टोरेंट वाज बैड, आई ट्राई इट. व्हाई? बिकॉज इट्स अ सिंपल एटीट्यूड. ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड नहीं है. लेकिन अगर आपका फेवरेट मूवी स्टार आपको ये बोलता है कि एक्चुअली व्हाट, यूजिंग प्लास्टिक इज टोटली ऑल राइट, सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एटीट्यूड टू चेंज, बिकॉज आपका उसमें वर्ल्ड अर्थ का कंजर्वेशन का एटीट्यूड है, उसमें आपका एक रिसाइकलिंग का एटीट्यूड है, उसमें आपका एक ह्यूमन सैक्रिफाइस, कितने सारे छोटे एटीट्यूड्स हैं. तो दैट विल बी वेरी वेरी हार्ड टू चेंज. सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस कितनी है. Probably if a less popular celebrity endorses a brand, then that brand is not very likely to do much sale. But अगर एक बहुत ही अच्छा brand, कोई बहुत ही popular celebrity, for example Taylor Swift, or someone who has a lot of millions and millions of followers, that person endorses a brand, then obviously we will be like, okay, अगर ये बोल रही है तो कुछ ठीक ही होगा, right? Message characteristics. Attitude will change when the amount of information that is given about a topic is just enough, neither too much nor too little. ठीक है, बहुत सारी बॉडी लोशन के अगर वो केमिकल्स और कंसिस्टेंसी और सब कुछ गिनाने बैठ गई, तो we will get bored and we will probably not be very convinced. On the other hand, if she's just like this is good, use it, and gives no reasoning whatsoever, then also. तो एक ad design करते हुए they have to really take care कि एक perfect amount of information उनको देना है जिससे कि the viewers will be convinced. Okay? इसमें ये भी है कि मोड ऑफ स्प्रेडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फेस टू फेस ट्रांसमिशन इज मोर इफेक्टिव देन इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन. तभी एड्स जो है वो फेस टू फेस है, आप समझ लो एक ट्रांसमिशन है. इनडायरेक्ट मतलब खाली वॉइस यूज कर ली, तो वो वाला भी एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाता है. ठीक है. टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ऑफ द टारगेट सच एज परस्यूएबिलिटी. अगर आपकी ओपन फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है, यू आर मोर लाइकली टू बी कन्विंस्ड. और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस हैं, then no. If you have a very high self-esteem, then also it will be very difficult to convince you of something. If you think you're already very intelligent, because obviously you have a high self-esteem, then you will think कि मैं तो already इस चीज के बारे में एक attitude बना चुका हूँ, why should I change it? Unless I find really compelling evidence, only then I will change my attitude. Okay? अब attitude behavior relationship कर लेते हैं, which is our next heading. So there you go. हाँ, इसमें क्या है, ज्यादा डोंट वरी अबाउट इट, छोटा सा ही पार्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट देयर वुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. मतलब जो आपके मन में एटीट्यूड है वर्सेस वेदर सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर्स दैट टू डिस्प्ले, उसमें कंसिस्टेंसी होगी ओनली इफ द एटीट्यूड इज स्ट्रॉन्ग एंड ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस. जैसे मैंने बोला, इफ यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, यू आर मोर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन अ मार्च अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. The person is aware of his or her attitude. Obviously, it should not be an unconscious attitude. And there is very little or no external pressure for the person to behave in a particular way, right? So maybe you want to go participate in a march, but then your parents are like, no, don't do it because there might be a stampede there might be this, there might be that. तो आपको motivation जो है external इतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है अपना act करने के लिए, versus दूसरी तरफ से भी हो सकता है कि someone is forcing you to participate in certain kind of march. Maybe you don't have such strong feelings about domestic violence, but your parents are forcing you to go to the march. Then obviously that will be one of the factors जो behavior में आपका attitude convert ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाएगा. ठीक है. So अब हम आते हैं prejudices and discrimination पे. ठीक है.
सो इसमें हम छोटा सा ही हमारा एक पार्ट है, लेट्स quickly get it done with. Prejudices क्या होता है? They are usually negative attitudes against a particular group and in many cases may be based on stereotypes. Stereotypes मतलब the typical way of behaving of to a certain kind of thing. Okay? So इसमें बहुत सारे sources होते हैं prejudice के. Let's study those. Again, learning comes into play. Association जो है हमने पहले पढ़ा है. Family, reference groups, personal experiences, media, ये जो हमने पहले सारे पढ़े हैं, they play a very strong role. A strong social identity and in-group bias. ठीक है? For example, अगर आप you feel very strongly about your school कि I am a student of so and so school and we are a community, we are a team, then more and you are favorable कि मेरा school ही best school है. ठीक है? First of all, you have to identify very passionately with your school and then you have to think कि मेरा school best school है. तो that will create an in-group bias. मतलब my school is better than yours, my group is better than yours वाला attitude. ठीक है? Then there is scapegoating. Scapegoating क्या होता है? Phenomenon by which majority group places the blame on minority for its own social, economic and political problems. The minority is too weak or too small a number to defend itself against such accusations. So you might have heard, because I have actually thought about this a lot, but I cannot use any other example. So I have to use this one. Sometimes you will say that, I'm not able to secure an admission in this kind of college or this kind of school because of a certain minority group. Then yeah, that is an example of scapegoating. Kernel of truth क्या होता है? Sometimes may people may hold stereotypes about what they think that must be some truth, है ना? कि अगर मेरी stereotype है तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच होगा ही, because these people सभी ऐसा बोल रहे हैं. अगर सबको ही ये community या ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ तो सच होगा ही इसमें. So that is kernel of truth. Self-fulfilling prophecy. इसमें क्या होता है? The group that is the target of prejudice is itself responsible for continuing the prejudice by behaving in ways that justify the prejudice. For example, अगर women के against एक prejudice है that they cannot function well as leaders, then एक internalized आपके मन में है कि हाँ भाई women cannot function well, and probably if a woman in front, in a position of power starts behaving poorly, then that is the kind of एक self-fulfilling prophecy. मतलब खुद ही अपने against जो stereotype है उसको बार बार हम propagate कर रहे हैं. ठीक है? unconsciously propagate कर रहे हैं, on purpose नहीं, unconsciously propagate कर रहे हैं. ठीक है? तो बहुत सारी strategies हैं to handle prejudice. Very quickly let's discuss those. Minimizing opportunities for learning prejudice. मतलब आपके parents अगर आपको टोक दें कि please don't talk like that about certain communities, then that is an example. Changing attitudes, जो हमने पहले से बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया. De-emphasizing a narrow social identity based on the group. जैसे मैं आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल दे दी थी कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं इस स्कूल का हूँ और वर्सेस वो सामने वाले स्कूल का है. Think of it as we are Delhi school people versus UP school people or Maharashtra. Or similarly think about Indian schools versus American schools. ठीक है? So let's get on with the second part of the chapter that starts with social cognition. तो social cognition हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. It refers to all the psychological processes that deal with gathering and processing of information related to social objects. ठीक है? जो भी हमारे आसपास social objects से related processing चल रही है. Now, let's study the concept of schema very quickly. Schema क्या होता है? Schema is basically defined as a mental structure that provides framework, set of rules or guidelines for processing information about any object. These are basic units stored in our memory. So ये fill in the blanks में बहुत आता है. Dash is the basic unit of memory. Schema. अब आप सोचोगे schema positive है या negative है? Schema actually कुछ भी नहीं है. Schema is just a sort of category. कि अगर for example जैसे कप, आपको याद है हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कप का. कप का स्कीमा क्या है कि इट इज अ राउंड ओवल काइंड ऑफ शेप्ड थिंग, इट हैज अ हैंडल. तो दैट इज अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कप. अब आप देखो ये भी एक कप है दैट आई हैव इन माय हैंड. दिस इज नॉट अ टिपिकल कप बट इट इज ऑल्सो अ कप. तो स्कीमा भी ऐसे ही होता है. टिपिकल जो चीजें होती है ना कि अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल विल बिहेव अ सर्टेन काइंड ऑफ वे. ठीक है? अगर हम इंडियंस है तो हम हिंदी में बात करेंगे. A lot of people have that stereotype, but that's not true because Indians can have any, we can speak in Tamil, we can speak in Telugu. बहुत सारी languages हैं. There are like so many languages that Indians can talk in. So it is a stereotype because most of people that they have met probably talk in Hindi. That's why. ठीक है? So it is negative या positive नहीं होता. It is just a way of categorizing information. वही प्रोटोटाइप का भी मैं आपको बता रही थी स्कीमा से रिलेटेड कि वो जो आप कप के बारे में सोच रहे थे कि टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कप वो आपका राउंड वाला कप होगा, बट दिस इज आल्सो अ कप. तो दैट आल्सो कम्स इनटू प्ले. सिमिलरली स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? These are inferences you have drawn that are not the result of your logical thinking or direct experience but based on preconceived ideas about a particular group. For example,
अगर आप if you think that for example all Americans are rich, this is a preconceived notion by a lot of people that any American who comes to India is actually pretty rich, but ऐसा कुछ नहीं है. That is a preconceived notion, that is not logical. Is it logical that all the people in America are rich? ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हर country में there is a poorer section, there is a middle class, there is a higher income section. तो obviously ऐसा नहीं हो सकता. It is based on our preconception. This is an example of a stereotype. Okay? Impression formation पे हम लोग आ जाते हैं. हमने शुरुआत में डिस्कस किया था. First of all, when we meet someone, we draw inferences about them as people, right? So this is called impression formation. I'm sure that आप अपने friends से, अपने teachers से, अगर आपकी class की shuffling होती है, new class teacher comes, first time आप उनको देखते हो, you are obviously very natural कि you will draw inferences about them कि मैम strict है, कि मैम थोड़ी सी lenient है, मैम friendly है, या मैम थोड़ी सी uptight है. Whether she will allow you to do certain kind of things or not. तो एक आध दिन में या एक आध घंटे में जो आप impressions किसी के form कर सकते हो, that is part of impression formation. But fortunately, first impression is not the last impression, as opposed to what Bollywood movies suggest. So हम आराम से अपना impression change कर सकते हैं. Obviously, as we find more about a person, we are more likely to form a more coherent kind of attitude towards them. ठीक है? अच्छा, attribution क्या होता है? The person who forms the impression is called the perceiver. Attribution मैंने आपको बताया था causes जो हम देते हैं किसी के behavior के लिए. So अब perceiver की बात करते हैं कि person who forms the impression is called perceiver. मतलब अगर आप अपनी class teacher को देख के impression form कर रहे थे, then you are the perceiver. और आपकी class teacher हो गई target. ठीक है? अच्छा, impression formation and attribution are influenced by the nature of information available to the perceiver. अब for example, आपकी मैम का उस दिन मूड खराब था, वो आई and she started shouting in the class. Then obviously your impression will be कि ये तो बड़ी गुस्से वाली है. But maybe that's not true, and that only happened because उस दिन उनका मूड खराब था. ठीक है? Social schemas in the perceiver, including stereotypes. If your ma'am, for instance, is an American, आप ऐसा imagine कर लीजिए कि exchange, in an exchange program, an American teacher has come to teach you, then again you will think that ma'am तो बहुत rich हैं, बल्कि that might not be true because of your stereotypes about Americans. Personality characteristics of the perceiver, मतलब what are your own personality characteristics? So if you are scared or more fearful towards angry people, so you will be more primed to see angry reactions only. Maybe मैम ने थोड़ा सा चिल्लाया, but मैम बाकी चीजें को भी बात करने लग गई, but आपने अपने डर की वजह से सिर्फ गुस्से पे फोकस किया. So that would be personality characteristics of your own that affect impression formation. Then obviously there are situational factors. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मूड खराब था. That is a situational factor. Maybe as she was coming, वो बस लेके आ रही थी तो बस में उनका किसी से झगड़ा हो गया, या वो सुबह आई थी तो उनका अपने spouse से, अपने husband से झगड़ा हो गया. Something like that happened, or kids were not listening. Something happened. Some situation was formed in a way that the impression was ruined. Impression formation can consist of 3 sub-processes. First of all is the selection. We take into account only some bits of information about the target. Second is organization. The selected information is combined in a systematic way. And inference. We draw conclusion about what kind of person the target is. ठीक है? छोटी सी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे मैम आई, मैम की आपने देखा कि मैम ने लेट्स से कि उन्होंने ट्यूसडे को ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा है. सो फर्स्ट इंप्रेशन यू विल सी मैम ने ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा है, आज ट्यूसडे है, probably ma'am is a big follower of Lord Hanuman. You can think like that because it is the first very first information आपने ड्रॉ करी, उसको आपने ऑर्गेनाइज किया कि अच्छा ऑरेंज ट्यूसडे, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंक्लूजन निकल गया मैम तो हनुमान जी की भक्त है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है? या अगर मैम ब्लैक पहन के आई है, मैम व्हाइट पहन के आई है, एकदम बेसिक चीजों को देख के जो आप डिराइव करते हो. ठीक है? द ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड अफेक्ट्स द काइंड ऑफ इंप्रेशन फॉर्म. प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है? जो पहले इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है रादर देन एंड में. ठीक है? और रीसेंसी क्या होता है? जो आपने अभी अभी सुनी है इंफॉर्मेशन, उसका भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है. ठीक है? तो प्राइमेसी में जैसे अगर कोई फर्स्ट सबसे पहले जाके कोई स्पीच दे आया तो आपको याद रह जाएगी, या रीसेंसी में अभी अभी सुनी है तो याद रह जाएगी. Halo effect क्या होता है? Tendency to think that the target person who has one set of positive qualities must also be having other set of positive qualities associated with the first set. तो हेलो ये हम बहुत करते हैं.
कि भाई किसी में अगर एक क्वालिटी है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने किसी को बोला कि वो बंदा बहुत ही इफ यू आर टोल्ड दैट अ पर्सन इज टाइडी एंड पंक्चुअल, यू विल ऑल्सो थिंक दैट दे आर हार्ड वर्किंग, कि अरे अपना घर इतना साफ रखते हैं और इतने टाइम पे आ जाते हैं, बहुत टाइम का वैल्यू, बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग बोला नहीं किसी ने, आपने ऐसे एसोसिएट कर लिया, ठीक है। एट्रीब्यूशन ऑफ कॉजालिटी पे आ जाते हैं हम। किसी भी एट्रीब्यूशन मतलब किसी भी रीजन जब हमें किसी का देना होता है एटीट्यूड का, तो हम उसको इंटरनली या एक्सटर्नली देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंटरनल क्या होता है, समथिंग विद इन द पर्सन, एक्सटर्नल इज समथिंग आउटसाइड द पर्सन, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी हम वो कर सकते हैं। स्टेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो चेंज नहीं होते, अनस्टेबल जो फटाफट से चेंज हो जाते हैं। तो यू विल सी कि अगर कोई फेलियर किसी ने लाइफ में फेस करी है, तो लोग उसके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर सकते हैं। इंटरनल में मतलब अरे इस बंदे में मोटिवेशन ही नहीं है, या ये हार्ड वर्किंग कम है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बेचारे की किस्मत भी खराब थी, एंड प्रॉब्ली उसका बिजनेस जो उसने फर्स्ट में पैसा लगाया वो डिमोनेटाइजेशन की वजह से डूब गया, और समथिंग लाइक दैट, सम एक्सटर्नल काइंड ऑफ फैक्टर, ओके। तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर पे आ जाते हैं। ओवरऑल टेंडेंसी फॉर पीपल टू गिव ग्रेटर वेटेज टू इंटरनल और डिस्पोजिशनल फैक्टर्स देन टू एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर्स, ठीक है। मतलब कि अगर किसी की फेलियर, मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर किसी की फेलियर को कोई भी रीजन देना है, मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल गिव एन इंटरनल रीजन कि यार इस बंदे में ही वो बात नहीं है कि इसको सक्सेस मिल जाती, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूशन मेड फॉर सक्सेस एंड एट्रीब्यूशन मेड फॉर फेलियर। इन जनरल पीपल एट्रीब्यूट सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स। अब अगर हम ये बात हो गई कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, पर हम खुद की बात करेंगे, अगर आवर ओन सक्सेस एंड आवर ओन फेलियर, अपनी सक्सेस की जो हम एट्रीब्यूशन करते हैं वो हम अपने इंटरनल ऑब्वियसली उससे करते हैं कि मेरे 20 on 20 आए बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी थी, और मेरे अगर 15 out of 20 आ गए तो यार पेपर ही बहुत टफ आया था, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट हम खुद फेलियर की एक्सटर्नल और सक्सेस की इंटरनल एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। Actor observer effect. Distinction is found between attribution that a person makes for his own positive experiences and the attribution made for another person's positive. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी और के बारे में पूछोगे तो पीपल विल से कि इसकी फेलियर की वजह है इसका लैक ऑफ मोटिवेशन, पर अगर आप अपनी फेलियर की बात करोगे यू विल से कि उस दिन पेपर टफ आया था, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट। अब हम बात करते हैं फटाफट से सोशल फैसिलिटेशन और लोफिंग की। ये आपने पहले भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं। सोशल फैसिलिटेशन मतलब क्राउड के आगे आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस हो जाना। सोशल लोफिंग मतलब लार्जर द ग्रुप, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है, इससे थोड़ा सा अनरिलेटेड है, ठीक है। तो पहले सोशल फैसिलिटेशन कर लेते हैं। इसमें इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन होता है। द पर्सन विल बी प्रेज्ड इफ द परफॉर्मेंस इज गुड और क्रिटिसाइज्ड इफ इट इज बैड। वी विश टू गेट प्रेज एंड अवॉइड क्रिटिसिज्म, देयरफॉर वी ट्राई टू परफॉर्म वेल एंड अवॉइड मिस्टेक्स। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, इवैल्यूएट होने का डर, ठीक है, कि मुझे कोई इवैल्यूएट कर रहा है, बस इतना ही काफी है, मुझे उससे डर लग रहा है, ओके। नेचर ऑफ द टास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसा कोई टास्क कर रहे हो जिसमें यू आर ऑलरेडी वेरी गुड एट, देन ऑब्वियसली यू विल रियली फील वेल इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। बट अगर बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको आपने पहले नहीं किया है, अनफेमिलियर, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन की पता नहीं क्या होगा, एंड आई विल प्रोबेबली फेस अ लॉट ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। सोशल लोफिंग क्या होता है? Social loafing is kind of related to this concept कि the less effort each member puts in, basically the larger the group, the less effort each member puts in, sorry. तो इसमें क्या होता है कि अगर social loafing, अगर आपने कभी भी कोई वो करा ग्रुप प्रोजेक्ट, तो उसमें ऐसा बहुत होता है कि 15 लोगों का प्रोजेक्ट है, अरे वो कर लेगा, देन ही इज ऑल्सो लाइक अरे वो कर लेगा, अरे वो कर लेगा। ऐसा करते करते ना सब लोग ही अपना 100% आउटपुट नहीं देते, ठीक है। अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दिस इज वेरी गुड सोशल लोफिंग एग्जाम्पल, कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पीपल से कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो हॉस्पिटल ले ही जाएगा, ये ले जाएगा, हाँ कोई ना कोई ले जाएगा, कोई ना कोई, सब कोई ना कोई बोल के वहां से चले जाते हैं। प्रॉब्ली ऐसा बहुत बार होता है कि हॉस्पिटल एक्चुअली वो बंदा पहुंचा ही नहीं, ठीक है। ये सोशल लोफिंग का एग्जाम्पल है, इसको कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मेरी को अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होके कम कम लगने लग जाती है अपने आप को, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी किसी और की है, और आप लोगों की दोनों की ही काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है? हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है। प्रो सोशल बिहेवियर इज वेरी वेरी सिमिलर टू altruism, which means doing something for thinking for or thinking about the welfare of others without any self interest. इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।
तो अगर आप किसी डॉगी को खाना खिला रहे हो, स्ट्रे है, या किसी कैट को खाना खिला रहे हो, देन प्रोबेबली दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर, बिकॉज डॉगी या कैट आपके लिए शायद कुछ इतना नहीं कर पाएंगे. यू आर जस्ट फीडिंग देम बिकॉज यू लाइक देम और बिकॉज यू आर वांटिंग टू हेल्प देम. ठीक है. बट इफ इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर आप अपनी मैम की इसलिए किसी चीज में उनका बैग इसलिए उठा रहे हो कि वो आपको बेटर मार्क्स दे दे, देन दैट इज नॉट प्रो सोशल बिहेवियर. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रो सोशल बिहेवियर डिटर्मिन होता है. हमारा जो फाइनल टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन एन इनबॉर्न नेचुरल टेंडेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स टू हेल्प अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज. ठीक है. हम में सब में ये टेंडेंसी होती है कि अगर हेल्प कर सकते हैं तो कर देते हैं. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्निंग. अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत इस तरीके से ब्रॉट अप किया है दैट दे रियली रीइंफोर्स हेल्पिंग अदर्स इन यू, देन ऑब्वियसली यू विल बी अ वेरी हेल्पफुल पर्सन. ओके. कल्चरल फैक्टर्स, हमारे यहाँ जैसे जो इन जापानीज कल्चर, इन इंडियन कल्चर बहुत हेल्प को, बहुत चैरिटी को बहुत ज्यादा एक वो दिया जाता है, प्रेफरेंस एंड वेरी गुडविल दिया जाता है rather than compared to Western culture. So that's why it's a cultural influence. When the situation activates certain social norms that require helping others, for example, social responsibility, कि we should help anyone who needs help without considering other factors. Reciprocity, कि अगर मैंने उसकी हेल्प करी है तो आगे जाके वो भी मेरी हेल्प करेगा, या if he has helped me before so I will help him now. ठीक है. इक्विटी, वी शुड हेल्प अदर्स व्हेन वी फाइंड दैट इट इज फेयर टू डू सो. ठीक है. कि यार अगर आपको कोई दिखता है कि समवन इज अनएबल टू वॉक एंड दे आर आस्किंग फॉर मनी, देन यू विल गिव देम द मनी बिकॉज यू बिलीव कि इट इज ओनली फेयर दैट दे टेक द मनी एंड हेल्प, एंड दैट विल हेल्प देम गेट द ट्रीटमेंट डन. ठीक है. एक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ पर्सन हु इज बीइंग हेल्प्ड. अगर आपको लगता है कि कोई आपका हेल्प लेके बहुत खुश हो जाएगा, बहुत थैंकफुल रहेगा, देन यू आर मोर लाइकली टू हेल्प देम रादर देन समवन हु इज वेरी थैंकलेस, आपको गाली देके चला जाए कि आप उसकी हेल्प करो. इवन देन सच पीपल एग्जिस्ट. तो इंडिविजुअल्स हु हैव अ हाई लेवल ऑफ एम्पैथी, दैट इज द कैपेसिटी टू फील द डिस्ट्रेस इन अनदर पर्सन, जैसे हमारी मदर टेरेसा, बाबा साहब आमटे, ये लोग जो है बहुत हाई लेवल्स ऑफ एम्पैथी अगर आप में है, आप दूसरे का पेन फील कर सकते हो, देन यू आर मोर लाइकली टू हेल्प देम. अच्छा, फैक्टर्स सच एज बैड मूड, बीइंग बिजी विद वन्स ओन प्रॉब्लम्स. अगर आपका मूड खराब है, आप अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी हो, मे बी यू विल नॉट हेल्प देम. ठीक है. और फाइनली डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरकम करना. ठीक है. व्हेन द नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स आर मोर देन वन, देन डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप अकेले हो, अगर आपका आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग देयर, देन मोर लाइकली यू विल बी हेल्पिंग देम रादर देन इफ 100 पीपल आर स्टैंडिंग आउट देयर. ठीक है. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. And if you have any kind of questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.